नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं eVidya चैनल नंबर 12 और इस चैनल के अलावा आप हमसे जुड़े हमारे YouTube चैनल के माध्यम से भी जो है NCERT ऑफिशियल और NCERT PMeVIDYA क्लास नंबर 12, इन सभी पर आप सभी का स्वागत करती हूं मैं रेणु भट्ट अपने इस लाइव इंटरेक्शन में, जिसमें हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। एंड द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इन दिस सेशन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में किस तरह से रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है आपको बताया जाएगा हमारे विशेषज्ञ द्वारा, जो इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो चलिए आप सभी का परिचय करवाते हैं उनसे। आप हैं मिस पूजा वोहरा। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने सभी देखने वालों को बता दें कि मैम पीजीटी बायोलॉजी हैं सेंट टेरेसा स्कूल इंदिरापुरम गाजियाबाद से। और कोई भी क्वेरी आपके मन में आ रही हो बच्चों, इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, यू कैन रीच आउट टू अस थ्रू आवर वेरियस मीडियम्स। आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबर पर जो है 8800440559, या फिर आप ईमेल के ज़रिए भी अपनी सभी क्वेरीज हम तक पहुंचा सकते हैं। आप कर सकते हैं ईमेल dth.class12@ciet.nrc.in पर। और अगर आप हमारे YouTube चैनल्स पे हैं तो लाइव चैट बॉक्स में जाके अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। ये सबसे तेज़ माध्यम है हमसे जुड़ने का, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बातों के साथ, अपनी क्वेरीज़ के साथ आप हमसे हमारे इस लाइव इंटरेक्शन में जुड़ें। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं और कमेंट भी ड्रॉप कर सकते हैं। सो वी आर वेटिंग फॉर योर पार्टिसिपेशन। हम आपके पार्टिसिपेशन का इंतज़ार कर रहे हैं। आप ज़रूर हम तक अपनी बातें पहुँचाएँ। और सबसे पहले हम पूजा मैम के पास चलेंगे और जानना चाहेंगे आज के इस चैप्टर में सेशन के लिए मैम क्या कुछ स्पेशल है आपके पास। धन्यवाद रेणु मैम। आज का जो चैप्टर है वो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है। सो स्टूडेंट्स, दिस टॉपिक इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग बिकॉज एज वी नो दैट फ्लावर्स आर ऑलवेज फैसिनेटिंग अस। फ्लावर्स हमेशा से हम लोगों को बहुत ज़्यादा फैसिनेट करते रहे हैं, चाहे हम कोई ओकेजन देखें या हम कोई भी फेस्टिवल देखते हैं, कोई फंक्शन देखते हैं, हम हमेशा फ्लावर्स की यूज़ या उनकी याद पर हमेशा डिपेंड करते हैं। और ये फ्लावर्स कहाँ पर हैं? तो ये फ्लावर्स हमेशा प्लांट्स पे ही होंगे ऑफ कोर्स। तो प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? तो हमारा जवाब है कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन हमेशा फ्लावर्स की हेल्प से होगा। तो हमारा चैप्टर कहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सो लेट्स सी कि फ्लावर्स हाउ दे हेल्प द प्लांट टू रिप्रोड्यूस। सो लेट्स स्टार्ट। यस मैम, प्लीज़। Sexual reproduction in flowering plants. You can see in this slide there are so many flowers. And we always see the beautiful bright colors on them. But actually, what are the flowers? What are the main portions in it? What are the main parts in them? So let's start. Let's see how they play important role in the sexual reproduction in plants. So sexual reproduction in flowering plants involves transformation of diploid sporophytic cells into haploid gametophytic cells by meiosis and subsequent fusion of haploid gametes of opposite sex to form a zygote which develops into an embryo. That means whatever the plant we are observing around us, they are the diploid in nature. Diploid means they are the sporophytic cells, means they are complete, they have the diploid number of the chromosomes. But during the sexual reproduction, they need to convert into the gametophytic cells, means they need to produce gametophytic cells by the process of a cell division which is known as meiosis. And meiosis results in haploid cells. That means the number of the chromosomes gets half. And when two different gametes fuse together, male gamete and female gamete, when they fuse together, then they form a structure which is diploid in nature, that is known as zygote. And that zygote develops into an embryo. So in all flowering plants, all these steps occur within a specialized reproductive organ, that is flower. तो मैम यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे, ये तो आपने इंट्रोडक्शन दिया बहुत अच्छे से, हम जानना चाहेंगे कंप्लीट और इनकम्प्लीट फ्लावर्स के बीच में जो डिफरेंस होता है, व्हाट दैट डिफरेंस इज ऑल अबाउट। मैम क्या है वो डिफरेंस? यस, सो मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर गेटिंग कन्फ्यूज्ड कि कंप्लीट फ्लावर किसे बोलेंगे और इनकम्प्लीट फ्लावर्स क्या होंगे। सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन? मैम, the flower which have all the complete whorls, all the 4 whorls. Okay. 4 whorls means if it has calyx, corolla, androecium and gynoecium. These are the 4 major portions of the flower or 4 major parts of the flower. So if a flower has
all the 4 components, then it is a complete flower. But if any part of it is missing in a flower, then it is known as an incomplete flower. I can give you an example. Can you see this flower? This is a flower of hibiscus, and you can see all the 4 whorls into it. 4 whorls means, what I mean to say, you can see the green color leaves into it. These green color leaves into it. These are the sepals. You can see the bright color part of it. These are the petals, and you can see this area. This is the reproductive part. I'll tell you in the detail, but you can see that all the 4 parts of the flower are present in this. So this is a complete flower. Okay. But if any one of it's missing, suppose sepal is missing, or a petal, or this reproductive area जिसमें एंड्रोशियम और गायनीशियम दोनों हैं, अगर इनमें से भी कोई एक नहीं है, then the flower is incomplete flower. Okay. So this is the basic difference, ma'am. Okay, fine. So this is the basic difference. तो मैम वो किसी भी रीज़न से इनकम्प्लीट हो सकता है, बाई चांस वो टूट गया हो या फिर Ma'am, this is only at the time of the formation of the flower. Okay. It depends on the species of the flower, species Okay. of the plant as well. तो उसके हिसाब से उसमें कैसे complete flower आने हैं या incomplete होगा, वो उसके ऊपर depend करता है. All right. So ma'am, please continue with your informations about flowers, ma'am. Yeah. So let's see the next one. So flower, basically they have the 4 parts into it, right? As in this, the topic one is the flower pre-fertilization. The events which occur before the fertilization are called pre-fertilization events. This slide says कि जब एक plant reproduction के process में जाएगा तो उसके flowers में क्या changes होते हैं, pre-fertilization में उसके अंदर क्या क्या modifications आते हैं, so that it can get ready for the sexual reproduction. During this process, several hormonal and structural changes occur which lead to the differentiation and development of the floral organ of flower. So let's see the structure of the flower. It is a modified condensed shoot. Let's see the meaning of this statement, okay, why the flower is known as a modified condensed shoot. Shoot means, as we know, the part of the plant which is above the soil is shoot. But why flower is the modified condensed shoot? Because just like the shoot, it has nodes and internodes in it. Therefore, it is known as the modified condensed shoot and consisting of 4 whorls or the floral appendages. 4 whorls, flower whorls or floral appendages means layers of the flower. Let's start from the outer to inner. So outer part is the calyx, second inner one is the corolla, and centralized main part of the flower is androecium and gynoecium. So the first outer whorl, the first part of the flower is calyx. Calyx, it is the outermost protective whorl of floral appendages. I mean to say that this is the first main part of the flower. Why it is protective? Because it protects the flower during the bud stage. When flower is in the budding stage, we can recall by visualize the example of the rose bud. We can see that the beautiful bright red petals gets protected by the green leaves. They are the calyx. So the main part of the main flower is the calyx because it protects the flower in the budding stage. An individual appendage of calyx is called sepal, and these are essentially green in color. So we can see from this flower that where the first whorl is, where the sepals are. So students, can you see that this is the complete green area? Right. This complete green area, not this one, this complete area where my finger is pointing, this is the complete calyx area, and it has the green leaves on it. We can count easily 1, 2, 3, 4 and 5. So all these 5 leaves are united with each other. These are sepals and they are green in color, they are protective. When this beautiful bright red
petals were in their budding stage, when the flower was in the budding stage, these sepals protects the flower. Right. So the next important part, let's move on. So next important part is the corolla. Corolla is the second whorl of the floral appendage, and it is the beautiful colored part. This is the second whorl of floral appendages that arise inner to the calyx. Individual appendages of corolla are called petals, which are brightly colored and fragrant, making flower attractive to help in pollination. So last 3 lines are very much important, which says the petals are brightly colored. So most of the students, many of the times they used to ask why the petals are bright colored, because they need pollination. The insects gets attracted towards their color, so they need to be brightly colored. Fragrant, yes, because most of the insects always attract with the smell. So the petals are beautiful, attractive and full of smell. So the flower becomes more attractive, so the insects gets attract towards them and helps in pollination. So this is the second part. The third part of the flower is androecium. Androecium, it is the male whorl consisting of stamen. Main whorl, this is the male reproductive part, and androecium has two main parts on it. First is the anther, the upper part, and the lower stalk-like structure is known as filament. Each stamen consists of an anther. You can see in the diagram as well. The upper yellow part of this stamen is known as anther, and the lower green, the stalk-like structure, is known as filament. And there is a small connective. Where is connective? Where anther and filament connects together. So androecium helps in the production of microspores, that is pollen grains, which containing male gametes within the anther lobes. So androecium plays very important role because it produces the male gametes, which helps in the reproduction, the sexual reproduction of plant. This is gynoecium, and this is the central part of the flower. This is the female reproductive whorl. An individual appendage is called carpel or pistil. It contains 3 parts. First, outer part, the topmost portion is stigma, then a long stalk-like structure known as style, and the last basal swollen hollow portion is known as ovary. Students, you can see easily in this diagram as well. The stigma is at the upper part, style is the long tube, and ovary is the basal swollen area. And this ovary contains a chamber inside into it which has ovules. So if I can show. Sure, ma'am. So we would request our team to have that flower on screen. So you can see that this long cylinder area, it has the tiny yellow structures on it. It can be on my fingers as well. So these are the anthers which contains the pollen grains, and at the top you can see there is a red color structure which is the stigma, and there is a long tube, this one. This is the style. Actually a style lies inside into it. When we dissect the flower, then the style can easily comes out. And where is the ovary? So by dissecting the flower, we can see the ovary at the bottom somewhere here inside the flower. So ma'am, we want to know about the future of the ovary, ma'am. Yeah, ma'am. Ovary is very much important because ovary forms the fruit. So and the ovary का जो बाहर का wall होता है, it forms the fruit wall. So ovary is always very important because it forms the fruits of a plant. Okay. It's really nice to know this information, ma'am. So आप और आगे क्या बताना चाहेंगे हमारे बच्चों को? So definitely, ma'am. Flower का थोड़ा सा और detail we need to study.
दैट इज़ कि इसमें इसके जो अपेंडेजेस हैं, इसके जो वर्ल्स हैं इन फ्लावर्स के, वो कैसे अरेंज होते हैं. सो लेट्स सी. So we can see that there is a stalk. This is known as a pedicel, or the stalk from where we can hold the flower, and there is some swollen area, swollen portion on it as well. We can see from the rose flower as well very beautifully. You can see that there is a swollen part is known as the thalamus area. Okay. This one. This is the thalamus and this is the stalk. And these are the sepals, green areas, which we studied earlier just now. And petals are shed here, and in this flower you can see the petals are united. But what is the arrangement of the sepals and petals here? So we can say in this flower, this is the hibiscus flower, which is on my hand. This is the hibiscus flower. This is China rose, and in Hindi it is the गुड़हल का फूल. तो इस फ्लावर में ये जो हम बाहर green leaves देख रहे हैं, all are united. So this condition has a unique name, which is known as the gamosapalous condition. Okay. Gamosapalous matlab when all the sepals are fused together, right? And if all the sepals are free, just like rose में अगर हम देख रहे थे तो इसके सारे sepals free थे, ये देखो. हाँ. So this is the polysapalous condition. Okay. Polysapalous मतलब जब उसके सारे sepals free होंगे, right? यहाँ पर ये fused थे. I can show the second whorl with the help of this flower. This flower, you can see that again all the sepals are, see, 1, 2, 3, 4 and 5. But these are free. These are not united just like the hibiscus. So this is which condition? This is polysapalous condition because all the sepals are free. Now what about the petals? In this flower you can see all the petals are united. They are not separate from each other. Right. They are all united. So this is all one. Yeah, this is all one. So this is the gamopetalous condition. Gamopetalous when all the petals united with each other. But आप hibiscus में देख सकते हो, hibiscus के सारे petals यहाँ से तो united है, but they are very much separated from each other. Right. Right. So this is the gamopetalous, gamosapalous, and the various situations. So it depends upon the flower. One more thing, ma'am, which I told you that कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो बड है मेरे हाथ में, ये हिबिस्कस का बड है, एंड द सेपल्स इनक्लोजिंग द फ्लोरल पार्ट जो अंदर हमें कहीं दिख रहे हैं रेड कलर के. राइट. तो आई टोल्ड कि सेपल्स helps in protection. They protect. Yes, they protect the inner part of the flower. They protect the petals, androecium and gynoecium. Right. Okay. तो मैम आगे चलें? Yes, definitely, ma'am. So this is the diagrammatic representation. Here you can see the diagrammatic representation of LS of flower. LS stands for longitudinal section. So when we cut a flower longitudinally, we can see the various parts. The outer part is the area, is a swollen part receptacle, and we can see the petals, sepal, anther, filament, stigma, style, ovary, inside it ovules. So these are the major parts. One more thing which is very important, that anther and filament collectively known as the stamen, and stigma, style and ovary is collectively known as carpel, which is the female reproductive part. While on the other hand, stamen is the male reproductive part. Now the pre-fertilization events in structures. Most of the time students get confused that what is the pre-fertilization events, because they used to learn about the fertilization only. So what is pre-fertilization? Pre-fertilization is the preparation of the flower before the fertilization. What are the changes going to be happen in a flower? In the flower, the androecium, that is the male reproductive part, and gynoecium, female reproductive part, differentiate and develop. They need to develop individually. Different structures and events involved in pre-fertilization are, there are the certain changes going to be happen in a flower for the fertilization. So what are the changes? First is development of male reproductive part, which is very much important. So let's see the stamen.
It is the male reproductive unit of angiosperm. It consists of two parts, the long and slender stalk called the filament and the terminal generally bilobed structure called the anther. In this diagram we can see the anther is just like a bilobed structure and some dot like structures are just near to the anther. What are these dot like structures? These are the pollen grains. Pollen grains which forms inside the anther, and when the anther gets filled with the pollen grains, anther get burst and all the pollen grains comes out. So this is the first event, that is development of male reproductive part. Let's see what is inside the anther. So it's very important to study structure of an anther. Anther is bilobed structure with each lobe having two theca. That's why it is known as dithecous, and they are separated by a longitudinal groove running lengthwise. In this diagram we can see the anther is in the CS condition, matlab cross section hai. We can see there are the pollen sac, and pollen sacs are filled with pollen grains, and we can see one more labeling over there, line of dehiscence, which means the anther bursts from this area so that pollen grains comes out. Structure of an anther. This is very important slide and very important part of the CBSE class 12th question as well. We can study the structure of an anther. In a cross section, the anther is a four-sided tetragonal structure consisting of four microsporangia which develop and become pollen sac, which are packed with the pollen grains. See, in this diagram we can see when we cut the anther, we can see the four parts of it. We can easily find out the four areas of it. The layers which form this four-sided tetragonal structure are, the outermost is the epidermis, inside it endothecium, next is middle layer, and the last one is tapetum. These are the four layers. We are going from outside to innermost layer. So the outer one is the epidermis, next towards the inner side is endothecium, next third is the middle layer, and the fourth and the last is the tapetum. Epidermis, endothecium and middle layer, all these three layers are protective in nature, right? And the tapetum, this is very important layer and the last innermost layer of this structure, and it helps the pollen grains to nourish. That means all the nourishment and food the pollen grains are getting from here. And we can see the four corners, जिसको हमने tetragonal बोला है अभी. Tetragonal means, tetra मतलब four, gonal means sides. So four sides पर we can see that there are the four structures which are somewhat brightly shown. They are the sporogenous tissues, and these sporogenous tissues goes certain changes and forms the pollen grains. Okay. So मैम आप pollen grains के बारे में बात बता रही हैं. यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे, are pollen grains useful for mankind? Yes ma'am. Pollen grains are very useful to mankind. Pollen grains are rich in vitamins, minerals and rich in antioxidants. So sometimes the pollen grains are available in the form of a pollen tablets. Okay. And basically the athletes and the sports person used to have them in their diet to get energy, because these are the energy boosters. Okay. So it's not necessary that pollen grains are always useful. On the other hand, sometimes they have some disadvantages as well, ma'am. Okay. So do they harm mankind as well? Okay. Yeah, ma'am. Because sometimes they give the disadvantages because these are allergic to some people. Some people are very prone or very sensitive to the pollen grains, and they have the chronic respiratory disorders like bronchitis, asthma, sneezing, itching, inflammation in their respiratory tract as well. So it's not necessary to say that is always they are
useful to mankind, but yes, pollen grains are useful. ओके, तो पोलन ग्रेन्स के बारे में आपको पता चला कि हाँ वो काफ़ी यूज़फुल है, लेकिन समवॉट समवेयर कई लोगों को उनसे एलर्जी भी होती है। yes, तो मैम ये तो बात हुई, हम फ्लावर्स की बात कर रहे हैं, आप इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे सभी व्यूवर्स तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पे हम एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी हो इस चैप्टर से जुड़ा हुआ या आपको ज़्यादा कुछ जानना है तो आप बेझिझक हमसे जुड़ सकते हैं विद ऑल योर क्वेरीज एंड डाउट्स। आप हमें कॉल कीजिए हमारे टेलीफोन नंबर पे जो है 8800440559, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल्स पर जाके कमेंट भी ड्रॉप कर सकते हैं। तो आप ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए आज के इस चैप्टर में जो है बायोलॉजी के 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और मैम आप इतनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में, और क्या आप बताना चाहते हैं हमारे सभी स्टूडेंट्स को मैम? जी मैम, अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात ये आएगी कि फ्लावर्स में ये जो पॉलन ग्रेन्स हमने पढ़े हैं जो बनते हैं, ये एक फ्लावर से दूसरी फ्लावर पर पहुंचेंगे कैसे? राइट, फर्टिलाइजेशन होगा कैसे? बिकॉज अभी तक तो हमने बस ये सुना कि फर्टिलाइजेशन होता है, बट फर्टिलाइजेशन होगा कैसे? तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा एक दूसरा प्रोसेस, दैट इज पॉलिनेशन। राइट, तो हम पॉलिनेशन के बारे में आपसे जानना चाहेंगे मैम। जी जी, so let's move to the next slide that which says about the some important another information. राइट, यस मैम। So this is the anther anatomy. You can once recall the pollen sac हैं, then उनके अंदर pollen बन रहे हैं और वो किस तरीके से liberate होंगे बाहर, मतलब pollen sac से वो release होंगे। Before starting the pollination वाला process मैम, so we need to study about the development of the female gametophyte as well. Female gametophyte का मतलब we need to study about the pistil. फिर इसके बाद हम pollination के process पे चलते हैं कि pollination कैसे होगा, fertilization कैसे complete होगा. So let's see pistil. What is it? The gynoecium represents the female reproductive part of the flower, and we all know that the pistil is having the three major parts. Stigma, that's the upper part, then the long tube-like structure known as a style, and the last basal swollen hollow part is known as the ovary. And ovary is the main part because it contains the egg into it, जहाँ पे fertilization का process ovary के अंदर complete होगा. तो हमने style, stigma और ovary तीनों को मिलाकर एक term बोला है pistil. Pistil में कुछ additional information मैं यहाँ पे share करना चाहूँगी मैम कि pistil consists of, if a flower consists of one or more carpel, then it is a monocarpellary. If it has two carpels, then it is bicarpellary. If it has three carpels, then tricarpellary, or many carpels is the multicarpellary situation. As the diagram says, आप पहले डायग्राम पे अगर देख रहे हैं तो वहाँ पे आपको तीन कार्पल नज़र आ रहे हैं, यानी तीन आप उसमें पिस्टल देख रहे हैं, तीन स्टिग्मा दिख रहे हैं, तीन स्टाइल दिख रहे हैं, तीन आपको ओवरी का पार्ट दिख रहा है. तो ये हमारा जो पार्ट है ये थ्री कार्पल्स है, ट्राई कार्पलरी. लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ एक ही होता तो हम इसको मोनोकार्पलरी कहते, अगर दो कार्पल्स होते तो बाई कार्पलरी कहते, और अगर तीन से ज़्यादा होते तो हम उसको मल्टी कार्पलरी कहते. नाउ लेट्स सी द कार्पल फ्यूजन. Apocarpus condition and syncarpus. Apocarpus means when all the carpels are separated. Apo means separated, when the carpels are separated. So that is apocarpus condition. But if all the carpels are united, then when they fuse together, then it is syncarpus condition. It is very easy to find out the difference. Syn means when we sync something, when we unite something, when we join something. So this is syncarpus, when all the carpels fused together. So pistil may be syncarpus, that is more than one pistil are fused together, as in papaver, solanum, etc. Or maybe apocarpus, that is carpels when they remain free, as in Michelia and rose, etc. So these are the some examples which shows the syncarpus pistil and apocarpus pistil. So this diagram is basically a complete information of the pistil. A typical pistil consists of a hollow basal swollen ovary, an elongated style and a terminal stigma which serves as a landing platform for pollen grains. Inside the ovary is the ovarian cavity
that is locule in which placenta is located. That means ovary is the main area where the fertilization happens. But as we just discussed कि how the pollination occurs, so the stigma plays an important part, which is the upper part of a pistil, जहाँ पे pollen grains land करते हैं और वहाँ पर pollination का process होगा. Now we will start with the topic pollination. Basically, what is it? What is pollination? So the transfer of pollen grains from the anther of the stamen to the receptive stigma of the carpel or pistil is called pollination. This is the very beautiful diagram which we can see in this slide. Here a flower from where the pollens are liberating, and through the air or an insect is over there, and this insect act as a pollinator. This insect helps to transfer the pollen from the anther to the next flower on its stigma. So this is pollination. जब एक फ्लावर का pollen grain किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर फॉल हो जाए और हेल्प करेगा उसको आगे फर्दर फर्टिलाइजेशन के लिए, तो हम इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं. बट हाउ इट हैपन्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन? राइट. बट बिफोर दैट वी नीड टू स्टडी द टाइप्स ऑफ फ्लावर्स. डू ऑल द फ्लावर्स ऑलवेज ओपन or do all the flowers always close? Means, are all the flowers are closed flowers or all the flowers are open flowers? So on the basis of it, the flowers are of two types. First is clistogamous flowers and second one is known as chrysogamous flowers. What is the difference between these two? Clistogamous flowers, these are closed flowers, and their anthers and stigma lie close to each other. Means flower is always closed condition पे है, तो उसका anther and stigma हमेशा close रहेगा. For example, viola, common pansy जिसको बोलते हैं, mirabilis, camelina and oxalis. These are the very good examples of clistogamous flowers. Here I can add some more information here. कि clistogamous flowers, when anther and stigma lie close to each other, then there is a chance of inbreeding depression, जिसके बारे में अभी हम आगे आने वाली स्लाइड पे बात करेंगे. Chrysogamous flowers, these are open flowers, means with exposed sex organs, जिसमें हम उसका pistil, हम उसका स्टेमन का पार्ट पूरा एक्सपोज देख सकते हैं. ऑन दीज पॉलेंस फ्रॉम द अनदर फ्लावर कैन लैंड ऑन द स्टिग्मा एज वेल. फॉर एग्जाम्पल कैथरिंथस एंड मिराबिलिस. सो दीज आर द chrysogamous flowers, means open flowers. Here is a slide which shows the chrysogamous flowers and clistogamous flowers. So viola, we can see there is good example of it. Now the types of pollination. Depending upon the source of pollen grains, pollination can be of the following types. It can be autogamy. In simple words, we can say this is self-pollination. This is next one, deuteronogamy and xenogamy, which is also known as cross-pollination. Okay. सो मैम यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन के क्या कुछ डिसएडवांटेज जुड़ा है इसके साथ? यस मैम, सेल्फ पॉलिनेशन जब भी फ्लावर्स में होगा तो उनमें हमेशा इनब्रीडिंग डिप्रेशन आएगा. इनब्रीडिंग डिप्रेशन मीन्स देयर इज नो जेनेटिक वेरिएशन. व्हाई? बिकॉज सेम फ्लावर का ही पॉलन है और उसी के स्टिग्मा पर फॉल हो रहा है. सो देयर इज नो नीड, मतलब कुछ भी नया उसके अंदर नई इन्फॉर्मेशन आ रही है. सो जेनेटिक वेरिएशंस के चांसेस बहुत कम होते हैं. सो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन में प्लांट जाता है. सो दिस इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन. ओके. तो मैम जैसे यहाँ पे ये तो सेल्फ पॉलिनेशन हुआ है, यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में भी डेफिनेटली आप बताने वाले हैं. तो इज़ दैट पॉसिबल कि अगर एक फ्लावर का जो
पोलन है, पोलन ग्रेन है, वो दूसरे फ्लावर में जाएं तो उसमें कुछ चेंजेस आए, इज इट? यस मैम, एक्चुअली क्या होता है कि सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन में बेसिक कुछ डिफरेंस है, तो पहले उसको जरा समझते हैं एंड देन शायद हमारा उस क्वेश्चन का आंसर हमें खुद भी मिल जाएगा। राइट। सो लेट्स सी कि सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगेमी कैसे होती है। प्लीज मैम। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब ऑटोगेमी। The pollen from the anthers of a flower are transferred to the stigma of the same flower. For example, wheat, rice, pea, etc. Almost all the clistogamous flowers are invariably autogamous, as there is no chance of cross pollination, because as we just discussed कि clistogamous flowers are the closed flowers. So when they never open, when they remain closed, so there is no possibility कि उनका pollen grain बाहर निकलकर किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाए. So there is no chance of the cross pollination. Right. तो जब क्रॉस पॉलिनेशन ही नहीं होगा तो उनमें जेनेटिक वेरिएशन आने के चांसेस भी जीरो हो जाएंगे, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन में प्लांट चला जाता है. सो दिस इज ऑटोगैमी. ऑटोगैमी ये तो बात हुई व्हेन अ pollen falls on the stigma सेम फ्लावर पे. बट क्या सेल्फ पॉलिनेशन सिर्फ यही है? तो सेल्फ पॉलिनेशन वी कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम एज वेल. पॉलेंस निकल रहे हैं एंड दे फॉल ऑन द स्टिग्मा, राइट, एंड ये पॉलेंस कहाँ से निकल रहे हैं? एंथर से. बट इट हैज़ द अनदर सब टाइप, जिटोनोगैमी. इट इज़ अ काइंड ऑफ पॉलिनेशन where the pollen grains from the anther of a flower are transferred to the stigma of another flower born on the same plant but at the different branch. This is very important part. That means plant is the same and the plant is having two different flowers or more than so many flowers on it. And when the pollen grain releases from one flower and it falls on the stigma of the another flower but of the same plant. So this is the jitonogamy. So ma'am, in this situation does the pollination occurs ma'am? अगर रोज़ का वो पोलन ग्रेन अगर जैस्मिन में जा रहा है तो क्या इसमें पॉलिनेशन हो पाएगा मैम? मैम, जब हम एक गार्डन की बात करते हैं तो गार्डन में तो वेराइटी ऑफ द फ्लावर्स है. एग्जैक्टली. सो देयर आर द बिकॉज वी कैन नॉट से कि वहाँ पे सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन ही है या क्रॉस पॉलिनेशन है. तो वहाँ पर पॉलन ग्रेन्स रिलीज होके इट्स अ 100% चांस और it will happen that the pollen grains of the rose they come out and fall on the stigma of the jasmine. So the question is, do they fertilize? Right. Do the pollination occur? So in this situation the answer is no ma'am. Okay. Why no? Because there would be the pollen pistil interaction. What is it? Pollen pistil interaction means if I say, suppose this is the stigma and this is the hibiscus flower. So if the stigma receives the pollen grain of the another flower, for example this is marigold, तो इसके pollen grain अगर इस पे fall हो जाएंगे तो क्या pollination होगा? I say no. Because pollen pistil interaction मतलब pollen grain and pistil means this whole stigma, style and ovary वाला जो area है, it rejects the pollen grains. Okay. That means you are not of that the pollen grains are of not of the same type, no? So why the pollen pistil interaction and how it occurs? Pollen pistil interaction इसलिए हुआ क्योंकि वो सेम स्पीशीज नहीं है, सेम प्लांट नहीं है. क्यों रिजेक्ट हुआ? बिकॉज केमिकल्स आर नॉट ऑफ द सेम काइंड. जो यहाँ के केमिकल्स हैं और जो इसके केमिकल्स होंगे पॉलन ग्रेन्स के और जो स्टिग्मा के होंगे, दे आर नॉट ऑफ द सेम टाइप, वी कैन से इन ईजी लैंग्वेज. सो दे जस्ट रिजेक्टेड एंड पॉलिनेशन होगा ही नहीं. तो जब पॉलिनेशन नहीं होगा, सो देर इज नो चांस ऑफ द फर्टिलाइजेशन. सो जिटोनोगैमी एंड ऑटोगैमी, these are the types, these are the self pollination. Let's see how the cross pollination occurs. Jitonogamy, before the cross pollination we can also something, it's very important information we want to share. The jitonogamy, it is functionally a type of cross pollination. Functionally it is a type of cross pollination, I say, involving a pollinating agent, but genetically it is similar to autogamy. Why it is similar to autogamy? Because pollen grains come from same plant. So genetically it is same, no variation.
But what is the xenogamy? This is cross pollination xenogamy. It involves the transfer of pollen grains from the anther of the one plant to the stigma of another plant, which brings genetically different type of the pollen grains to the stigma during pollination. For example, papaya and maize. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक प्लांट का एंथर निकला है, उसके pollen grains निकले एंथर से and they fall on the stigma on the another flower of the another plant, but the condition is the plant is of the same type. Means अगर इस hibiscus के flower का pollen grain release होगा तो वो pollen grain इस hibiscus के stigma same species के flower पर ही fall अगर है जो कि दो अलग अलग plants पर लगे होंगे तो this is cross pollination. But the condition is that the plant should be same. तो मैम यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि हमारे पास 5 मिनट का समय और शेष है अपने सत्र के लिए. सो वी हैव लेफ्ट विद 5 more minutes. क्या कुछ ऐसी बातें जो आप हमारे सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहेंगे जो उनके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक मैम? Yes ma'am, definitely. So this chapter is very important first of all because this is the first chapter of the first unit ma'am. Okay. And from the CBSE point of view, this pollination question again is very important because there is a chance to ask a question from the examiner side ki what is the difference between the xenogamy and geitonogamy or justify the statement ki geitonogamy is a, we can say is a type of the xenogamy. So these are the some important questions, so one should prepare this topic very well. Okay. तो ये तो बात हुई क्वेश्चंस की मैम, और क्या बातें हैं जो आप हमारे बच्चों को बताना चाहते हैं मैम चैप्टर से जुड़ा हुआ? कंटिन्यू करें मैम अपनी बातें प्लीज़. Yes. So मैम चैप्टर को जब भी आप हैंडल करें so do it practically because when you study the chapter and if you do the practical work simultaneously, if you dissect the flowers you can see its parts, then you can easily understand that what is the main part of the chapter says. और चैप्टर के बहुत माइन्यूट पोर्शंस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है. प्रिपेयर इट्स MCQs एज वेल. ओके. तो मैम हम कंटिन्यू रख सकते हैं, अभी हमारे पास टाइम है तो अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ा सकते हैं मैम. यस मैम, डेफिनेटली. सो लेट्स मूव ऑन. So we were talking about cross pollination, right? Yes ma'am. So we can see in this slide that कि here the cross pollination is happening. The pollen grains are coming out from the anther and a pollinating agent is here, that is an insect. So the one major part is that कि pollinating agents हमेशा insects ही होंगे? So answer is no. Okay. There are the variety of the pollinating agents. It can be insect, it can be wind, it can be air, it can be bird, or sometimes it can be an animal as well. So these are the pollinating agents which help in pollination so that the sexual reproduction takes place after that. This is a very beautiful diagram which says all these two events simultaneously: xenogamy, autogamy and geitonogamy. Right? Where the geitonogamy is written, we can easily see that the pollen grains are coming out from the anther and they move on to the stigma of the another flower but of the same plant. And where the autogamy is written, we can easily find out the pollen grains are coming out from the anther and they fall on the stigma of the same flower. So this is auto. And where the xenogamy is written, we can find out the pollen grains of the anther is coming out of the flower and then it falls on the another flower's stigma, but the plant should be same. The condition is plant should be of the same species. So this is xenogamy. ओके. तो यहाँ पे तो बात हुई क्रॉस पॉलिनेशन की और मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया. मैम क्या कुछ ऐसे की पॉइंट्स हैं जो आप जाते जाते हमारे सभी व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं? कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बातें जो आप इस चैप्टर से जुड़े हुए हमारे बच्चों को बताना चाहते हैं? यस बच्चों, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात, जैसे अभी हम लास्ट में समझ ही रहे थे पॉलिनेशन के बारे में, ऑटो और जेनो और जिटोनोगामी के बारे में. तो देर आर द सम प्लांट्स विच आर एक्वेटिक इन नेचर. Aquatic means they are hydrophytes. So
डू इट इज़ ऑलवेज नेसेसरी कि हाइड्रोफाइट्स हमेशा जो हैं वो वाटर के थ्रू ही पॉलिनेट करेंगे? सो इट्स नॉट नेसेसरी। तो यहाँ पर भी आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेडी होता है कि डू ऑल द हाइड्रोफाइट्स pollinate through the water currents? So explain the statement or justify it. So the answer is no, because there are some examples, for example like water hyacinth and the water lily. These are the good examples which says कि hydrophytes तो हैं ये, लेकिन इनके जो flowers होते हैं they come out the water, they are the above the surface of the water. So when the pollination happens, it can't happen with the water current, it happens with the insects. So please start reading very minutely, because there is a chance of MCQs or the reason assertion questions so that come in your exams. So please do read the chapter very properly. And do observe your surroundings as well. Definitely, ma'am. तो ताकि आपका नॉलेज बढ़े और आप देखें। और मैम क्योंकि अभी समय हमें बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रहा है इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन पूजा मैम हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप ये चैप्टर लेकर आए। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू मैम, आपने इतने अच्छे से पूरा चैप्टर हमारे सभी बच्चों तक पहुंचाया और आई एम क्वाइट श्योर डियर लर्नर्स एंड व्यूवर्स, आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में भी आया। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी आ रही है, आप कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं और कुछ बात या फिर आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल के ज़रिए अपनी बातें बता सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है dth.class12@ciet.nic.in। आपको हमारे आज के सत्र की डिटेल्स उसमें ऐड करनी है ताकि हमें पता चले कि आप किस सेशन के लिए अपनी डिटेल्स क्वेरीज हम तक पहुंचा रहे हैं। आज हम बात कर रहे थे बायोलॉजी के 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स हमारा टॉपिक रहा। आप अपनी क्वेरीज़ हमने लिख कर भेजें और आप इस सेशन की डिटेल्स भी ऐड करें। और अपने सभी देखने वालों को हम बता दें कि हम यहाँ पर तो अपने आज के सत्रों को विराम दे रहे हैं, लेकिन आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं प्रातः 8 बजे से। हम सोमवार की बात कर रहे हैं, हम योग शक्ति के साथ अपने कार्यक्रमों की सत्रों की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम एक बात करते हैं, समस्या पे बात करते हैं और योग के द्वारा उस समस्या का हम निदान चाहते हैं। तो आप ज़रूर योग शक्ति में हमारे साथ जुड़े रहें। 12 बजे का समय रहता है टीचिंग लर्निंग इंटरवेंशन फॉर इंक्लूसिव क्लासरूम प्रोग्राम का, जिसमें हम बात करते हैं समावेशी कक्षा के प्रति अपनी समझ का दायरा बढ़ाने वाली बातों पर। और फिर 2 बजे से हम आपके लिए सभी सत्र लेकर आते हैं 5 साढ़े 5 बजे तक। 4 बजे हम आपके लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम लेकर आते हैं और 5 बजे हम लेकर आते हैं सहयोग सत्र, जो हमारा स्पेशल सेशन है, जिसमें हम बच्चों की मेंटल वेलबींग पे बात करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चों को साइको सोशल सपोर्ट प्रोवाइड की जा सके। आप अपने साथ बना सकते हैं हमारे साथ इन सभी सत्रों में। और अभी फ़िलहाल मुझे रेणु भट्ट को मेरी पूरी टीम के साथ दे अनुमति। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार।